महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो ये जो कर्म योग में अंतर बढ़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, ये तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावन आत्मा हूँ, और ये कर्म इंद्रिया करनहार है। ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्म इंद्रिया से कर्म कराना है, लेकिन मैं कर्म
फौरन चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, आवो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, महक रहा है मधुबन तुमसे। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 7, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है सदा निर्भय। अव्यक्त इशारे, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मणात्माओं की निशानी है।
दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा के हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। सुमन, भगवान की गोद में ब्राह्मण, मैं अभी कहाँ हूँ? मैं भगवान की गोद में हूँ। बाबा अपना आकाश सिंहासन छोड़ मुझे यहाँ लेने आए हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मुखवंशावली संतान, सभी आकर्षणों से मुक्त, अलौकिक सुख में स्थित। अभ्यास पहला, मैं भगवान की गोद में ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि एक पर स्थिर है। दूसरा, मैं बाबा की मुखवंशावली संतान हूँ। उनकी गोद 1 सेकंड की दूरी पर है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी को रोज ये स्मृति दिलाई जाती है कि बच्चे देही अभिमानी रहो, देह भान नहीं होना चाहिए। तो देही अभिमानी रहने के बहुत बहुत लाभ है, बहुत प्राप्ति है। सबसे बड़ी तो जब देही अभिमानी होते हैं तो जो आत्मा के अनादि गुण हैं वो आप ही खुद ही इमर्ज होते रहते हैं। जैसे एक होता है अपने को स्मृति दिलाना, मुझे प्रेम स्वरूप होना है। लेकिन अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं, आप नई अभिमानी हैं, तो स्वतः ही प्रेम स्वरूप होंगे। तो गुण और शक्तियाँ दोनों देही अभिमानी स्थिति से मर्ज होती हैं। मुझे याद है जब बाबा के पास मैं पहली बार गई 1958 में, तब हम लोग अभी स्टूडेंट ही थे। तो बाबा शाम को रोज 5 बजे हम लोग कहता था पहाड़ी पर जाके बैठो और अभ्यास करो 1 घंटा कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूँ। सिर्फ 1 घंटा यही अभ्यास करो। और आज मुझे जब आज ये पढ़ा व्यक्ति इशारा, तो वो दिन याद आए कि क्यों बाबा इतना हम बच्चों को जोर देते थे आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी बनने से जिस समय जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो इमर्ज हो जाएगी। क्योंकि आत्मा में गुण और शक्ति हैं, लेकिन उनका बहुत कनेक्शन हमारे संकल्पों से और स्मृति से है। अगर हमारा संकल्प ये है कि मुझे किसी से वैर नहीं रखना है, तो वैर न रखने की जो शक्ति है वो देही अभिमानी बनने से ही आएगी। तो जैसे बाबा अभी हम बच्चों को आज की परिस्थिति अनुसार, चलो युद्ध हो रही है, परंतु उसका प्रभाव जो होगा वो हर प्रकार से न केवल ऐसा समय आ सकता है
कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी ना हो। अगर हम गंभीरता से उस बात स्थिति को देखें तो दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि डर में हम निर्भय मतलब भय हो, और दूसरा होता है समझदार होकर हमें जिन बातों में परिवर्तन लाना है, जैसे सुख सुविधाएं हैं या जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको अब धीरे धीरे हमको कम करना होगा। सुख सुविधाएं तो खैर कम करनी है, पर उसके अलावा भी ऐसी चर्चा हम लोग कर रहे थे आज कि ऐसा समय आ सकता है कि आपको आवश्यक चीजें भी ना मिले। तो बाबा ने तो कह दिया है बच्चों को दाल रोटी तो मिलेगी, राइट, कढ़ी चावल कढ़ी खिचड़ी भी मिल जाएगी, कुछ भी सिंपल तो मिल ही जाएगा। तो आज बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी पॉइंट है, और जिसका अभ्यास जो है वो देही अभिमानी स्थिति से बहुत संबंधित है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सदा निर्भय रहो। क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सूक्ष्म में भय, परंतु उसको हम हलचल में ना आकर के समाधान निकालें उसका। तो उस पर सबको देह अभिमान्य करो अभ्यास जितना हो सके। मैं अजर अमर आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत, ऐसे करके जो भी हमारे अनादि आत्मा की गुण है, फिर दैवी गुण आ जाते हैं, राइट। हर्षित मुख हैं, संतुष्ट हैं, सदा एक रस हैं। तो अनादि गुण जो आत्मा के हैं वो होने से निर्भय बनने की जो शक्ति है, देखो परिस्थितियां हम लोगों के सामने तो अभी बहुत कुछ नहीं आया है, होगा, इसलिए बाबा तैयार कर रहे हैं। पर बाबा ब्रह्मा बाबा के समय पार्टीशन भी हुआ देश का। एक ऐसा समय आया कि कुछ उनके पास धन नहीं, भोजन नहीं, रहने के लिए कोई कहते हैं इंडिया में पहुंचे तो जिन्होंने कहा था कि हम प्रबंध देंगे, किसी कारण से वो नहीं दे सके, तो उनके पास था ही नहीं, कहाँ जाना है। फिर कैसे बहनों ने जा कर के आबू में ऐसे ऐसे, क्योंकि 300 लोग कहाँ रहे, बॉम्बे दिल्ली में तो नहीं रह सकते ना। तो एक पुरानी राजाओं की महल होते थे, तो राजा लोग गर्मियों में आबू में आके रहते थे, और सर्दियों में फिर राजस्थान में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो बड़े बड़े महल खाली पड़े थे। हाँ, तो उन्होंने जा कर के फिर एक किसी से बात की, फिर एक रहने को स्थान मिला, पर इतना उनके लिए कठिन था, और वातावरण कई चीज़ों का कुछ भी नहीं। कईयों को डायरिया होता था, बुखार होता था, कोई गोली नहीं, दवाई नहीं, पर वो लोग अपना अचल अडोल रहे हर बात से। तो इसलिए जब मैं आज सुनती हूँ कई लोग बता रहे हैं कि मोहिनी बहन ऐसी तैयारी रखो, ये करना है, ये बहुत महंगा होगा, ये होगा, काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि एक बहुत अच्छा सेशन करेंगे जिसमें सभी को थोड़ा सा इन बातों से ज्ञात कराएंगे। लेकिन भय नहीं हो, पर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी अभी, कि अचल अडल रहो कोई भी बात में। तो अपनी जो वाइब्रेशंस है उसका वातावरण बनेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना है। मन में ही आती है ना हलचल तो पहले। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है, अचल रहना। तो बाबा कहती है दुनिया की हलचल से, दुनिया तो हलचल में है, साधारण बात नहीं है।
सारे हमारा जितना भी कार्य चलता है, उसमें गैस चाहिए, तेल चाहिए। और आज उसी को ही खत्म करते जा रहे हैं, ये सोच के कि इस देश के पास ना हो, पर सारी दुनिया में उसका अफेक्ट आ रहा है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो हलचल में है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा कहते हैं कि हलचल में और ही दूसरों को धैर्यता, विश्वास, शक्ति देना। तो बाबा कहते हैं आप लोग भी हलचल में आ जाते हो क्या? बाबा कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ड्रामा की हर सीन को जानते हुए नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वयं ही अचल रहती हैं। ज्ञान है और शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जो भी वायुमंडल से, फिर जो भी वायुमंडल होता है उसमें घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। निर्भयता भी एक शक्ति है, और अगर खुद निर्भय है ना तो आसपास सब शांत हो जाएगा। अंदर में थोड़ा भी भय होता है ना, तो उसकी वाइब्रेशन से भी कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसक वातावरण है, आप एकदम अचल अडोल रहो, निर्भय रहो, तो उस वाइब्रेशन से दूसरे के मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मन में कुछ करने के लिए होता है, पर आप एकदम अलर्ट भी रहो लेकिन निर्भय भी रहो, तो दूसरे का मन बदल जाएगा। ऐसे कई अनुभव हमको सुनाते हैं कि वही बहन ऐसा ऐसा हुआ, पर हमने एकदम बाबा की याद में निर्भय रहे। तो आपकी वाइब्रेशन से, हाँ, जिस कारण से, जिस व्यक्ति से, परिस्थिति से भय उत्पन्न होता है, वो नहीं होगा। तो अभी समय ऐसा है, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और अब जब सामने हमारे परिस्थिति आएंगी तो बाबा उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अचल रहो, अडोल रहो। पहले मन में चलायमानी होती है, फिर सब दुनिया में ऐसा लगता है नीचे ऊपर हो रहा है। तो बेशक आज नहीं दिखाई दे रही है तरफ, हम सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत दूर नहीं है। वास्तविकता जिसमें मैंने कहा कि कठिनाइयाँ, सुविधाएं, इस तरह से इस समय आएगा जो बाबा ने सब कुछ हमें बताया हुआ है, कुछ नया नहीं है। बच्चे ये होगा, बच्चे ऐसा होगा। बाबा ने साक्षात्कार किया तो देखा कि कैसे बॉम्ब से दूसरे पर डाल रहे हैं। आज क्या हो रहा है? दिन भर यही हो रहा है, कि इससे बड़ा डालो, इससे बड़ा डालो। और इतना पानी पर भी, पहले तो बाबा कहता था आसमान में भी अपना बना दिया कि मेरा आसमान है। किसका आसमान है? नहीं, आज पानी के ऊपर सारी लड़ाई जो हो रही है वो समुद्र में हो रही है। जहाज को नहीं गुजरने देंगे, इस जहाज को इस तरह नहीं गुजरने देंगे। अभी पानी भी अपना होता है क्या किसी का? प्रकृति ने इतना बेहद में सब बनाया है, पर मनुष्य ने उसकी हदें कर दी, बाउंड्रीज बना दी कि इतना पानी हमारी तरफ का है, इतना आसमान हमारा है, आपका जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकता है। डर भी रहता है। अभी हम लोग भारतवर्ष से आए, तो बहुत सारे एयरलाइंस से रूट बंद थे सब ना, तो सभी ने, बहुतों ने नई टिकट्स ली, नया रूट लिया।
हम लोग भी आए, हमारी तो सेम टिकट तब तक खुल गया था, थोड़ा ठीक हो गया था। तो भी जो 15 घंटे थे फ्लाइट में, वो फ्लाइट में 17 घंटे, 18, और 2 घंटे फिर रोम में रुके। तो जो फ्लाइट हमारी 14 घंटे की थी, उसको 20 घंटे लग गए। नहीं, लंबा रास्ता हो जाता है। ये तो बाबा की हम बच्चों को दया है, बाबा के आशीर्वाद है, जो हम सभी हर प्रकार से, हाँ, लंबे को भी फील नहीं करते, और दूसरा बाबा की याद में सेफ भी रहते हैं। तो बाबा ये बहुत कह रहे हैं, अचल अडोल, अचल अडोल। डर पहले मन में आता है, संकल्पों से आता है, अनुमान करते हैं। आज देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ हुआ, ठीक नहीं हुआ, उसका असर मन में रह जाता है, फिर एंजाइटी होती है, थोड़ा डर होता है। पर उसी बात में हो सकता है आज कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया। तो कोई भी टेंशन है, एंजाइटी है, डर है, हमको अब धीरे धीरे उन सब बातों से दूर रहना है। और बाबा जैसा कह रहे हैं बच्चे, निर्भय रहो, अर्थात अचल अडोल रहो, न मन की चलायमानी हो। क्योंकि मन में होता है तो तन में भी आता है, संबंध में भी आता है। तो एकदम शांत चित रहो, शीतल रहो, और अभ्यास करो ज्यादा से ज्यादा। मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों से काम करा रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सब गुणों का स्वरूप हूँ, और सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। भरना पड़ेगा अपने अंदर, ये अभ्यास करते करते हमारा सोचना ही ऐसा हो जाए जो देह अभिमानी स्थिति का है। तो फिर जो कुछ भी जैसा भी होगा, बाबा तो है ही हमारे साथ, अपनी शक्तियाँ भी काम करनी चाहिए ना। सिर्फ बाबा पर तो नहीं छोड़ देंगे, बाबा कहेगा पहले अपनी यूज करो, जहाँ नहीं आप कर सकोगे मैं हूँ, मैं मदद करूँगा। अब बाबा कर दे ऐसा तो नहीं होता है, हिम्मत हम रखेंगे, मदद बाबा की मिलेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सभी को सदा निर्भय रहो, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। जो कुछ होता है, कई बार कई घटनाएं होती हैं, शरीर का है, आत्मा को तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करते करते अपनी निर्भय, सदा निर्भय स्थिति जरूर बन जाएगी। ओम शांति। अभी हम सभी कुछ क्षणों के लिए एकदम आत्मिक स्थिति में, देह से न्यारे, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा करके बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के अव्यक्त वाणी तारीख है 20 जून 1977। सदा सहयोगी बनने का साधन है महादानी बनना। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हो, उन्हों का संकल्प क्या करेगा? सदैव विजय रतन की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजय बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। सदा विजय का नशा व स्मृति रहेंगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। पहला दिन अकेले कमरे में जब मैं भट्टी में बैठी तो पहला समय तो मेरे को व्यतीत न हो कि कैसे करे। बार बार योग लगाए, फिर बार बार नीचे आए, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। अच्छा, फिर बाबा मामा 10:30 बजे मुझे योग कराने आए। उसके बाद में मेरी स्थिति बदल गई। ऐसी स्थिति बदल गई कि जैसे मैं ऊपर परम धाम में बैठी हूँ, सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ और मैं जैसे बिल्कुल लाइट के कार में बैठी हूँ। सिवाय एक बाबा के और कहीं मेरी बुद्धि नहीं है। जैसे एकदम शांति में बैठी हूँ। बाबा आवे, योग करावे, योग करा के चला भी जाए। मुझे किसकी आवाज नहीं अच्छी लगती थी, समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहा है। तो 7 दिन में बाबा ने मेरी काया जो है ना पलट दी, मेरी सारी बुद्धि बदल दी। और उस दिन से जो बाबा कहता नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, जैसे उस दिन से मुझे अनुभव हो गया नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का, कि जैसे किसी भी बात में, किसी भी चीज में मेरी बुद्धि नहीं है। क्या कहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। जैसे मेरी ऊपर की स्टेज, और कहाँ भी मेरा लगाव नहीं, झुकाव नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उसके 10 दिन के बाद मुझे वापस लखनऊ जाना था। जब मुझे भेजा तो भी मैं ऐसे जा रही थी जैसे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ क्या। जब मैं घर में भी जाके पहुंची तो मैं एक एक को ऐसे देखूं जैसे ये पता नहीं कहाँ है, ये कौन है, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, किस जन्म के संबंधी हैं। जो मेरी आंखें बदली हुई तो वो मेरे को देखे कि ये मेरी लड़की को हुआ क्या है। ये तो जैसे मेरे
होती हुई मेरे से दूर है। बहती प्यार की धार, दृष्टि तेरी है निराली, बहती प्यार की धार, भूल ना सकेंगे बाबा हम तेरा अनुपम प्यार। Om Shanti. Constantly experience an unshakable, immovable, and constant stage. Constantly fearless. To remain unshakable in midst of any type of upheaval is a sign of an elevated Brahmin. The world may be in upheaval, but you elevated souls cannot fluctuate. Why? You know every scene of the drama. Knowledgeful and powerful souls remain constantly and naturally unshakable. So, you must never become afraid of the atmosphere and remain constantly fearless. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to us lab, God's lab. Where am I right now? In God's lab. Baba came down from the throne of the sky to take me from here. I am Brahmin, his mouth-born child, free from every attraction, immersed in supersensuous joy. Practices Step 1. I am a Brahmin in God's lap, free from every attraction. My intellect stabilized on the one. Step 2. I am Baba's mouth-born child. He came down to take me. The lab is 1 second away. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. When we listen something, it makes us think, and we look at our own maybe few years of life, and lot emerges of when I was fearless and when I had certain fears. I think that in everyone's life, fears to come.
But how do I overcome fear? Because there are certain moments, something just happens. So there is fear which emerges. But how do we overcome that and just become very stable, unshakable, and fearless? And that's what actually the theme of the whole month is: unshakable and immovable. Fear is something which really could shake you. Everyone has different kinds of fear. Some, they have fear of what darkness. Some have fear of animals, some kind of animals. It's like also certain sanskar of fear are there. So some, they don't have that much fear. I remember that it was in 1960s, early 60s. I was in India, Delhi, and there was war. So when there is war, then they come and prepare you. That when you see some planes coming around your house, you go down or don't come out, and a lot of things they train you for. I know recently also when they were expecting some kind of more war or conflict between Pakistan and in India, even in Mount Abu, because the border is very near, right? So they had to have blackout. And it's not they didn't have light, but they say if you have lights, they will find the location. If they have to throw bombs, so they have to have darkness. So a lot of, from government and from our own family, lot of training happened. And that is where actually I got the thought to buy those little lamps which I gave to every Nevasi, about 3,000 of them, so that and they can keep it in the room. And whenever there is some kind very dark and they have to walk, they should walk with that. And until now, even this time, we gave few hundred. Many centers, small towns, they have a lot of blackouts, and so they can use that. But then I came to know that it's not, there was darkness or blackout, but it was, they had to do it. So many emergencies come. So there are various situations where fear do arise. Is there anyone here who is never fearful? No? Even for a few moments, no? Maybe it doesn't stay long, but what will happen? What's my future? What is this? Like very subtly, these questions arise in the mind, and because of that, there is fear. So, but then different timings, different situations, Baba has given us knowledge. And one of the important practice really is just become detached from body, soul conscious. I belong to Baba. I am in Baba's lap. Just feel yourself in Baba's arms as if there is nothing around me. And that becomes reality too. It's not just your thoughts, but you just feel it. Baba's protection is there. Baba's drishti is there. I read so many experiences of people when they were in very, very fearsome situations, how they remembered Baba, had trust in Baba, or practiced soul consciousness, situation changes completely. So Baba wants us to remain unshakable, immovable. And I think that as any stage we will create,
unshakable. Just imagine that stage will create such powerful vibrations that those vibrations will change external situation also. So I think that our aim is there, and especially at this time, even how to trust someone. There are so much frauds, so much people deceive you, trap you. So much is happening all over. But we have to remain very stable. Because when you are stable, then your abilities and your powers work very well. Like power to think even. In fear, if you think, and when you are fearless, you think, there will be difference in the thoughts. But these are the things to be experienced, and keep in mind that Baba has said we have to be unshakable, immovable. Baba has said that I should be fearless. So keep that in mind, and then look at yourself and on your journey, how you face everything, power to face. All that will give you many, many experiences. So Baba says, remain fearless, unshakable in the midst of every type of upheaval. Is a sign of an elevated Brahman. When I saw Dadis, they were really fearless. Sometimes I used to wonder that how does it happen. Baba says that the world, maybe in the world there may be upheavals, which is happening a lot these days. Baba says, but you elevated souls cannot fluctuate. Why? Why you shouldn't? You know that every scene of the drama, you are knowledgeful, you are powerful, and Baba says, remain constantly unshakable and immovable, right? So you must, Baba says, never become afraid of the atmosphere and remain constantly fearless. In everyone's life will have different situations. It's not same. And everyone had different kinds of fears, not same. But I think that maybe we do not have mostly fear, but little bit somewhere, sometimes could emerge. So keeping Baba's blessing, our homework, our practice, and that is be fearless and no fear. Especially at this time when there is a lot of fears. Losing job, might not have something, so many subtle fears. So trust is important. Trust Baba, trust your fortune, trust drama, and definitely you will experience your stage, which is fearless, unshakable, and immovable. Om Shanti. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Elizabeth. Yes. Lots of love to the Avyakti Parivar and to you, Mohini Didi. Yes, my name is Elizabeth. I'm serving in the Anubhuti Retreat Center in California. I'm so glad, Didi, that you
took up this topic in more detail, because recently, which isn't a surprise actually, many students are coming with fears and traumas, and also what I call tags. So traumas, triggers, and tags. It's just a way to remember it, because the traumas are coming from the past, and how to handle souls that are experiencing a recollection of a trauma, and also to not be affected if they are being triggered, and also if I'm being triggered. To me, a trigger is when a sanskara erupts or kicks in, and it doesn't have any merit to whatever is happening. It's as if something's being projected onto the scene. It's a simple thing that's occurring, and it gets blown out of proportion. And so to me, that's a trigger. And then we don't talk about it. So I'm really glad that we're discussing that today, to be unshakable in the midst of these, triggers, but also a fear of being labeled. And that's what I mean by tagged. So we shouldn't be too honest in the sense that we make a big deal out of it, but how do we pass through these things? And how do we help others pass through these triggers? I think that I feel that we have to do enough what Baba is telling us to do. That means some of the practices which Baba gives us, or even there are practices based on this avyakti signal. Internally, we have to move, with effort, we move so far and so fast that even if there are traces, there are certain things which erupt, but doesn't happen. I could say with my own experience, only for me is just keep making effort, self-improvement, be better in relationships. So I'm very engaged all the time into self-efforts. And lot of things which used to be part of me look so far, as if I was never that, and lot of beautiful experiences remove all those fears, anxiety. Like when I had to go to India this time, there were one or two things which were not pleasant last time with travel. So I had this anxiety, what will happen? Will I be able to manage? And but we have to do it, have faith in Baba. And everything was so good, so good. And so same was today. Bhumi Ben came, she had few medicals since morning. And last one, she said she had so much anxiety. And it was, she said, was so good. Doctor was so good. So I think that somewhere, if we move along and keep practicing, and of course you have to move along. Time never stops, so you cannot stop. So as much we move properly with our effort and faith, then the beautiful experiences of attainments in life help us to remove whatever was in the past. And one thing I find that whatever happened in the past was beneficial, had to happen. You would not have been what you are today without that past. Like I never regret, I never kind of feel why this happened in the past. I always say somewhere I have benefited, somewhere it had been useful, maybe I learned something. So don't regret your past, and embrace it. And time, with the effort, you don't even remember. So much happens, and a time comes you live in the present. And I think that now for all Baba's children,
even anyone comes with problems or worries and fears, be calm, be cheerful. Recently, there had been a lot of situations here, there. And when they wanted me to ask Baba, so Baba says, okay, there is a lot of fire, what you do? Remain calm and cool. Just remain calm and cool. And I'd been telling them, and not react, not fear some, because then you could do something wrong, then it could be, you don't know, wrong It makes after it all. worse. Yeah, so I think just self-effort, self-progress, engage with Baba, and I think all that, we will be able to create that kind of environment and our vibrations, and then whatever different methods of knowledge we will tell others, they will find it very helpful. It won't be just knowledge, but it will be the words of power, words of blessings. Yes, that's very helpful. And also to not try and fix people. I'm not an authority, to remedy people's traumas. That's really up to Baba. Also, I feel a solution to Didi is the bodiless stage. And I really liked how, well, we called her Little Mohini in those days. She was sharing her experience earlier in the program, and that it was such a transformative experience that she just didn't even see the world the same. And I was wondering, from your generation, Didi, with Baba, what was instilled in you? Like, how do you, and I'm talking about the bodiless stage. What is the bodiless stage? How do you know you've actually acquired that stage, and how to sustain it? What are the steps? So the bodiless stage, yeah. Yeah. One is the knowledge, then is awareness, then is practice, and then you become embodiment of that. So first is awareness, that is, I'm literally paying more attention these days, that every little time after I am soul and these are souls, and I'm just using my body to, have the knowledge, the thoughts, and it will create awareness in you. And as much we do, that much percentage has become your stage of being bodiless, maybe 70%. So bodiless stage is really changing knowledge into awareness, into practice, and then your own stage. And everyone has to do that. That means just simple thoughts of I am soul, I am peaceful soul, I am loveful soul. These thoughts during day, few times, can help you to not only become soul conscious, but also it's like you don't feel, as if bird is not in the cage, It's like some kind of freedom. Otherwise, the body consciousness is like a cage, you feel suffocating. But when you practice soul consciousness, bodiless, that freedom is there, That's what experience bodiless stage is. How do you, okay, so that's your experience. So the stage I heard was, the knowledge, and then you bring in the awareness, and then you practice. And I liked what you said too, was just simply see others as souls. And I remember when I first came into Gyan, I would even be waiting in line for the groceries, and I would just see everyone playing their part, and they're all souls. It was so intoxicating. Right. Yeah. Also, too, Baba was talking today in the Murli about, total surrender. I think it was like apna sab kuch safal karo swaha karo, right? And I hope I said that right? That
surrender everything and make your actions worthy or worthwhile, and to just surrender everything. And that to me is such a wonderful thought. And it's interesting, we're talking about bodiless, we're talking about a constant, stable stage. And here Baba's inviting us to surrender everything. And if you do, then I will surrender myself to you for 21 births. So I'm just thinking from when you first met Baba, bapdada, and what was that experience for you, that I will surrender everything? That this is it. This is what was that moment for you? Because you said you came out of curiosity first, and then Yeah, it took time. No, definition of surrender is I belong to Baba, everything belongs to Baba, and then I am the trustee. So if everything is Baba's, then I am a trustee. Am I using my thoughts, my wealth, my time according to as a trustee, or is it mine? My mind says this, or this is what my body. So this my finishes in between. And I give you an example that, this whole thing, the way it is understood and done. So one time, one brother said, now I am surrender. But he was working. So he thought that I have to surrender. So when he got his first paycheck, he took it to Baba. And Baba said, he said, Baba, I have to make it worthwhile, suffer, surrender. Baba says, okay, you gave to Baba. So Baba gave him back the check and he said, whenever I need or its center needs, I will let you know. And then he was told after some time, a new center was starting. I was part of that. And that brother brought a big check. And he told the whole story that Baba has told me and is from Baba. And so some other we thought, when center was self-sufficient, to kind of give him back. And he said, no, it was from Baba. But then he was saying that how that money keeps coming back to him in some way or other. Like he knew that when you are trusty, Baba trusts you and Baba gives you more, then you use it. Same could be with the body. So that time I learned little bit about that Baba doesn't want, okay, now empty your bank account, bring it to me, or whole day just sit and do what I have to tell you. No. Everyone has part to play. But how do I remain as a trustee? Belonging to Baba and be a good trustee. That means you're not wasting anything, and whenever there is something big, you take proper directions and then you do it. Because lot of time, many things we do is a trap of karmic accounts. If we are not really following proper directions. And I said, but why you didn't ask? You should have, don't follow, but at least discuss what you're doing. Because you don't know, you end up in losing a lot of money, your lot of time, your health, so many things happen. So I think surrender is belonging to Baba. And after belonging, you remain trustee. And trustee means you don't do anything on your own. Right? You always will ask one who has made you trustee, consultation, and then you remain all the time, never being deceived, never lose anything. For me, anything, I say, oh, it's Baba's, where will it go? We will find it definitely because it's Baba's. So deep within that relationship is formed where trust, I am trustee, and Baba looks at me as trustworthy. So it's very interesting how Baba says, okay, then if you belong to me, I and my everything belongs to you. Very beautiful experiences in life.
Yes, it is a beautiful experience. I like how you had framed it, that it will bring benefit even in this lifetime and closer to Baba. It's like a reciprocation of some kind. And also he was mentioning too, to surrender our sorrow, our fears, and to the topic today, those triggers and traumas. I also liked what you said, to be constantly happy, that you need to sustain that earlier today. So thank you, Didi. I prepared a song that's of Wow. happiness. You are now in advance. Everything is ready. We don't Well, have to tell. We are happy. yeah, it's a sweet song. I can't say I'll have a song prepared every time that I come, but I came across this song. It's an oldie goldie song from the 40s, 50s, but it's so appropriate. And every time I sing it, I become happy no matter what. It's just a sweet song. Okay. Yeah, sure. We are happy. Okay. So I have some music with this one. Oops, 1 second. 1 second. I have to set the okay. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a star looking like a toy, peeking through the branches of a tree. Talk about a thrill. Talk about a joy. I'm just happy to be me. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You've gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna make a dream come true? Talk about the child saying to the Lord, Golly Baba, I am lucky 'cause. Talk about the Lord saying to the child, you and me is lucky to be us. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? If you don't talk happy and you never have a dream, then you'll never have a dream come true. Ba 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 ba. Very good. Isn't that Very fun? good. We are happy. It Yes, makes me yes. happy. Baba said no. Play the game with happiness, So thank you very much to Okay. make everyone happy. Okay, Om Shanti Didi. Om Shanti.
Om Shanti. We really enjoyed your songs, sister. And yes, we want every time new song when you come. So tomorrow is Thursday and our schedule from Amritvila, 3:30 am to 4:45 am. In the evening, 5 to 6 p.m. English Sakar Murli. Together with that, in breakout room, 5 to 5:30 p.m. Avyakti Children Murli class. 6 o'clock Bhatti will start, followed by Hindi series Bhog Offering by Mohini Didi. If anyone would like to offer Bhog, please send your name to 516-717-9171. You can email us, you can text us, you can WhatsApp us. Then we have English series, Chit Chat, and now let's remember Baba and take Drishti from Didi. जीवन हुआ
तू पास है तो डरने की क्या बात है बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है तू साथ है तो डरने की क्या बात है तो डरने की क्या बात है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति, ओम शांति।